Assalamu alaikum. I am Dr. Lodhi Kaneez Fatema from Political Science Department in J.A.T Art Science and Commerce College for Women, Malegaon Dist-Nashik. Dear student, you are welcome in my video lecture consist on MCQs on marginalization. This is the part 2 of this topic. पार्ट 1 में हमने 10 क्वेश्चंस सॉल्व किए थे। यहाँ से 11th क्वेश्चन शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 11, इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया a majority of tribal lands remain under the control of Indian dash. There are 4 options is here. A. Police. B. Military. C. Government. D. People. Correct answer is B. Military. Question number 12. There are a total of dash national parks in India. हिंदुस्तान में टोटल कितने नेशनल पार्क्स हैं? 4 ऑप्शंस यहाँ दिए हुए हैं। A 100, B 102, C 109, D 104। सही जवाब है D 104। Question number 13. Dash % of tribal groups from rural India are currently living below the poverty line. कितने % ट्राइबल ग्रुप्स BPL लेवल पर जी रहे हैं? 4 options are here. A1 48, B 42, C 46, D 44. Correct answer is A 48. Question number 14. According to the census of 2011, Muslim constitute dash % of Indian population. 2011 के सेंसस के मुताबिक हिंदुस्तान में मुस्लिम आबादी का रेशो क्या था? 4 ऑप्शंस आर हियर. A 14.2, B 14.5, C 14.9, D 14.7। सही जवाब है A 14.2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, मीनिंग ऑफ मार्जिनलाइजेशन। मार्जिनलाइजेशन की मायने क्या है? 4 ऑप्शंस हैं यह. A forced to occupy the site, B at the center of thing, C both A and B, D none of these। इसका सही जवाब है A forced to occupy the site। क्वेश्चन नंबर 16, Who are Adivasis? आदिवासीज कौन हैं? 4 ऑप्शंस हैं यहाँ पर. A ओरिजिनल हैबिटेंट, B ट्राइबल्स, C both A and B, D other than given option। करेक्ट आंसर है C both A and B। Question number 17. The term scheduled tribes is used for dash। शेड्यूल्ड ट्राइब्स टर्म किसके लिए यूज़ होती है? 4 ऑप्शंस हैं यहाँ पर. A
Adivasis, B. Urban people, C. Rural people, D. Poor people. करेक्ट आंसर है आदिवासीज। क्वेश्चन नंबर 18। नियम गिरी इज अ sacred hill of dash। चार ऑप्शंस हैं। ए आदिवासीज, बी क्रिश्चियंस, सी सिख्स, डी मुस्लिम्स। करेक्ट आंसर इज ए आदिवासीज। क्वेश्चन नंबर 19। Who are minorities? Four options are here. A is community large in number, B community small in number, C both A and B, D none of these। हमारा क्वेश्चन था माइनॉरिटीज़ कौन होते हैं। सही जवाब है बी कम्युनिटी स्मॉल इन नंबर। जिस कम्युनिटी की तादाद कम होती है वो माइनॉरिटी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 20। एज पर सेंसस 2001 डैश इज द रिलीजियस ग्रुप विथ लोवेस्ट लिटरेसी रेट। 2001 सेंसस के मुताबिक कौन से मज़हब के लोग कम पढ़े लिखे थे। ए हिंदू, बी सिख, सी मुस्लिम्स, डी क्रिश्चियन। करेक्ट आंसर इज सी मुस्लिम। Thank you very much for listening these MCQs. It is useful in your coming exam. Thank you very much.